Hello everyone and welcome to the next session on vocabulary building. And when I'm saying next session, and this would be the last session as far as vocabulary building module is concerned and as far as the basic module is concerned, yes, there will be many more sessions which will be coming up with the advanced module and many more sessions on live platform as well. But as of now, to talk about the basic module, we are getting into the last session. And I hope by this time, those who are listening to this session, you might have listened to all or you might have watched all my videos which I have covered till now on vocabulary building, and you are all set to get into my next module, which is reading comprehension. And you must be going through the resources which I have, told you during the starting of the class, from where you should build your vocabulary. And you must be reading as well. With this hope, let's start this session. And as I have promised that in my last video, I'll be talking about actual vocabulary which you can see in your, actual questions which were there in the management examination in past throughout the years, be it TISNET, be it Symbiosis, be it IFT, be it Narsi Munshi for that matter. And how to remember these words? To remember these words, I'll be again using the same technique, either root word or picture vocabulary. And I would say mostly it is picture vocabulary to remember the words, right? So here we go. The last session, vocabulary building, actual questions, actual management questions, which are there in the examination in past some years, right? So let's start. So the first word on the list which I'm talking about is puissant. Someone is a puissant personality or puissant behavior. What is this word puissant is all about? If I am taking, let's say for example, Elon Musk is a puissant personality, or Mr. Ratan Tata is a puissant personality, or Mr. Mukesh Ambani is a puissant personality. What is the word puissant is all about? Puissant का मतलब क्या होता है? Someone who is energetic. In many contexts you can use the word. Puissant का मतलब क्या है? Someone who is foreseeable. Puissant is basically someone who is influential, someone who is powerful, someone who is potent, someone who is vigorous. ये सारे word use हो सकते हैं किसके लिए? Puissant personality के लिए. And in this particular video, I'll try to cover at least 120 odd words to talk about bare minimum 120 odd words with synonyms, antonyms put together. So when I'm talking about the word puissant, these are all the words which you can look at. So from next time, if let's say Mr. Mukesh Ambani is coming on TV or Mr. Ratan Tata is coming on television, you should not say that influential personality आ गया. भाई हम लोग respect से बोलेंगे puissant personality आ गया. Right? Let's move to the next. एक जगह मैं बात कर रहा हूं मिस्टर मुकेश अंबानी की, such a powerful personality, और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं किनकी? opprobrium. What is opprobrium? Uncle like this. Sir, don't talk about him, right? सलमान खान अभी भी केस लड़ रहे हैं, डिफेमेशन केस उन्होंने फाइल किया अगेंस्ट केआर के. मिका सिंह इनको मारने के लिए आ रहे हैं, वो घर छोड़ के भाग गए हैं. All these things in news. Yeah, I do read these news as well. So KRK, हर चीज की क्रिटिसिज्म कराना हो, KRK को बुला लो, इन्होंने जिंदगी में खुद कुछ किया हो या नहीं किया हो. The word opprobrium, अगर आप याद करो हमने बात किया था, we use this word, it is basically used for maligning someone's image. It is basically used for derogating someone's image. It is basically used for denigrating someone, vilify someone, censure someone. ये सारी images के लिए, ये सारे words के लिए हम भाई साहब बात कर रहे हैं KRK की. By the way, opprobrium as a word which is not used for personality, but I am relating this with KRK so that you can remember the word कि जो आदमी जिंदगी भर सबकी क्रिटिसिज्म करता रहे और जिसको मेलाइन करता रहे, उसके साथ उसको बोलेंगे वो opprobrium कर रहा है, right? The article which KRK is writing, or the speech which KRK is talking about, seems opprobrium, right? What is this opprobrium? To malign someone, to vilify someone. The next on the list is when I'm talking about the word juggernaut. Juggernaut जो word आया है, ये word आया है हमारी संस्कृत language से. Juggernaut as a word, the word is coming from Sanskrit language, जिसका मतलब होता है भगवान जगन्नाथ. ये वर्ड आया है संस्कृत लैंग्वेज से, जिसका मतलब है भगवान जगन्नाथ. रिसेंटली वी हैव कंक्लूडेड जगन्नाथ यात्रा एंड उससे वहीं से वर्ड आया है जगरनॉट. समवन व्हिच इज ह्यूज. भगवान जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत ही ज्यादा भगवान जगन्नाथ हैं, पूरे जग के नाथ हैं. दैट इज द वर्ड जगरनॉट इज ऑल अबाउट, राइट? यू कैन यूज दिस
word for something which is monster-like in a positive context, matlab something which is very, very big. A juggernaut burger, a juggernaut pizza, juggernaut sandwich. You can use all these words because juggernaut basically means very big, right? The next on the list that I'm talking about is irresolute. Maybe I'll be able to crack CAT exam or not. Maybe irresolute, which if those who are not able to see this GIF because it's there in the white color. So what is this GIF is talking about is written maybe. I'm still not able to decide. हो सकता है. So maybe basically something which is uncertain. Something which is equivocating. मैंने याद करो पढ़ाया था मेरे वीडियो के अंदर. Equivocating, politically correct. I don't know what's happening. Equivocating. Indecisive. I'm not able to take the decision. Vacillating thoughts. I'm having a vacillating thoughts that should I go for a vocabulary module or should I start reading with or I start with reading comprehension. I'm still in the vacillating thoughts that according to my preparation, should I appear for CAT this year or next year? That's what the word vacillating is all about, right? Or irresolute is all about. Next is filibuster, a political term. A political term basically. Filibuster का मतलब क्या होता है? It is nothing but a delaying tactics. Guys, these words in the form of one word substitution in exams like IIFT, in words in the form of synonyms or antonyms in exams like TISNET and MEDS or for that matter symbiosis, SNAP आ चुके हैं. And these are those high frequency words which you will find in these examination. And please take this video seriously. Do note these words down. आपको ये हर तरीके से help करेगा. So filibuster basically is a politically motivated term. It's a political term. इसका मतलब क्या है basically? Delaying tactics. You must have heard many a times when we talk about the House of Parliament, we are talking about Lok Sabha, Rajya Sabha, opposition parties, they do their best to ensure that ye government ye bill pass na kar paye. They will go to that dharna, they will go to the strike, or they will start their shor sharaba. What is this? This is a filibuster. This is a delaying technique जिसको आप procrastination बोलते हो in a normal language, but filibuster is a very, very formal word. So procrastination basically. When we talk about procrastination, इस procrastination word से थोड़ा मैं मतलब नेगेटिव होता जा रहा हूं because whenever I talk about interview, जब हम लोग interview preparation की बात करते हैं, many students when they start their introduction, I am a bit of procrastinator. Why are you using this word? Weakness can be much more. और कोई और भी weakness हो सकती है आपके पास. और 90% students जो है वो procrastination word के साथ आते हैं. Why? प्लीज किसी ने अगर इंटरव्यू में बोला था अच्छा और सामने वाले को अच्छा लगा है, नॉट नेसेसरली ये वर्ड सबको अच्छा लगेगा. सो प्रोकास्टिनेटर सब लोग वर्ड यूज कर लेते हैं. दैट्स द वर्ड फिलिबस्टर इज ऑल अबाउट. डिलेइंग टेक्टिक्स, एज आई सेड, ऑब्स्ट्रक्शन. Obstruct karna is the word which you can use for filibuster. Let's move to the next word. The next is erudite. Erudite word आपको दो जगह बहुत मिलेगा. जब आप आगे जाके कंपनीज ज्वाइन करेंगे, जब आप आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, या फिर जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इस वर्ड को पढ़ा होगा. ये वर्ड हम पूरी मतलब इन कॉर्पोरेट लाइफ दो बार तो यूज करते ही करते हैं. वन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड द सेकंड एट द टाइम ऑफ लीविंग. At the time of joining, जब बॉस हमारे बारे में मेल लिखता है, I would like to welcome Mr. Prashant Sugandh for the role of senior manager, blah blah blah. And when I have to give the reply showing that I'm glad to be a part of an erudite organization. And when you are leaving, then the same boss will write that mail that we thank Prashant for his immense contribution to build this company, to build this particular this. And there also I have to write, it was a great honor to be a part of that erudite organization. Erudite का मतलब क्या होता है? A knowledgeable organization, right? Well educated organization, a learned organization. मतलब you can use for other things as well. Knowledgeable. ये सारे words जो use होते हैं किसके लिए? Erudite. No, erudite नहीं है, erudite. The next on the list is encomium. Again, if you are regularly watching my videos before this, I have used the word encomium. Some that speech of writing which is full of praises. A panegyric type of a writing, or something which is full of praise for someone, that, or you can use the word obsequious kind of a thing, or a sycophant kind of a writing is a encomium. Paying a homage to someone is a encomium.
Complimenting someone is an encomium. Panegyric tone is an encomium. To accolade someone is an encomium. So ये सारे words आप use कर सकते हो encomium के लिए. The next on the list is denome. No, it's not denouement, it is denome. And here we go. It's a rap. It's a rap. No, we are not talking about a Subway rap, or we are not talking about a MACD rap. We are talking about rap in the sense it's finish, the finale, the conclusion, the final part, the end, the final act. In सब को हम लोग क्या बोलेंगे? Denome. So these are all the words which are used for denome, right? So next time जब Game of Thrones का series खत्म हो रहा हो या last episode पे आ रहा हो, we are moving towards denome. The denome is pending for me. This is the word which you should use. This is the word which you should use. Denome. Okay, next. Compendium. Right? Compendium basically आपने I'm sure सुना होगा कहीं ना कहीं. Compendium का basically मतलब है to summarize something. So woman here is reading the book and she is kind of summarizing it, the whole word. Compendium basically means to summarize, to concise part of something, a collection of something. ये सारे words जो हैं किसके लिए आएंगे? Compendium. A compendium of GK for symbiosis examination. A compendium of words for, let's say, Narsi Munji examination, which means a concise part. आप for example, अपने graduation के exam से पहले you carry that kunji with you, that छोटी सी कुंजी जिसको बोलते हैं last past year paper की या important questions की जो आप pocket में लेके घूमते हैं and in which पूरे साल के important questions वहाँ लिख के और वही पढ़ के चले जाते हैं और वो कुंजी बड़ा negative, बड़ा derogatory सा term लगता है. अगली बार बोलना कि I am just referring the compendium. भाई साहब respect आ जाएगी. Compendium बोल रहे हो, कुंजी नहीं. कुंजी तो तुम लोग यूज करते हो, मैं तो compendium यूज करता हूं. हाँ? The next is precarious. What do you mean by the word precarious? Let's guess. Let's guess from this picture precarious. A building is collapsing. A precarious relation. A precarious building. A precarious for that matter. A precarious underpass. A precarious overpass. ये सारे precarious क्या हैं? Uncertain के लिए भी यूज होता है. Collapse. It is used for not securely held or something which is insecure. So ये सारे words use हो सकते हैं precarious के लिए. I am sure you guys are noting the words down. You are not taking the screenshot. And if you are noting the words down, I am telling you these words will definitely be helpful for you. Because मैं जिस तरीके से images के साथ ये words पढ़ा रहा हूँ, it will definitely be helpful, right? The next is tractable. Tractable. यहाँ पर मैंने word दिखाया dog, a pet here, right? Tractable. And if you see the position of that pet, he is kind of, accepting by the master, what master is saying, or listening to the master. This basically the pause which I have definitely taken is, he is kind of listening to the master, right? And he is a malleable. He is amenable. He is easy to deal with. He is listening to his master. And these are the words which you use for tractable. A accommodating person. A adaptable person. That's the word which you can use for tractable. Okay. The next on the list, docile. The word you can use for this is docile. Docile personality हम लोग कई बार word use करते हैं, right? Next is abscond. Now let's see this word. अंग्रेजी word बड़ा ढंग सा word लग रहा है. अब इस abscond word को देखो हम लोग किस अलग-अलग context के अंदर use करते हैं. If you go to let's say English news channel, there you will see the line. The absconding fugitive, Mr. Nirav Choksi, is all set to come to India. That's one word. अब यही चले जाओ आज तक में, वो भगोड़ा नीरव चौकसी क्या इंडिया वापिस आने वाला है? See the difference. भगोड़ा, right? So abscond का मतलब क्या होता है? Yes, they can't help it. The fugitive or absconding is nothing but bhagoda. You can use the word fugitive, you can use the word run away, you can use the word escape, you can use the word vanish, to slip away. इस सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? absconding. इस सारे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? absconding. Absconding is the word which is used for this. Let's move to the next. Next word is fanatical. What do you mean by the word fanatical? हमारी मांगे पूरी करो. I don't know if this word is all about. The image is all about हमारी मांगे पूरी करो. Fanatical. Fanatical army. A fanatical organization. A fanatical personality.
And when I'm saying the fanatical, the first word which I've written is zealous. It's not jealous, it's zealous. What do you mean by zealous? The word ous, as I said, means full of. The word ous basically means full of. The word zeal basically means energetic or enthusiastic. So someone who is full of enthusiasm, someone who is full of enthusiasm or someone who is energetic is zealous. Militant, a hostile, a militant, an enemy like, right? Eager, a keen. ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं for what? For fanatical. In short, you can use this word for someone who is very aggressive. Someone who is very aggressive, a fanatical personality. Right? Let's move to the next. Extreme. Yeah, the word is extremist, जिसको बोलते हैं. So who is this extremist? He's a kind of a fanatical guy. Okay, don't be too fanatical. Vituperative में बाकी काफी बार बोल चुका हूं, so इसको नहीं समझाते हैं ज्यादा. That's vituperative. Boss और एम्प्लॉय की हालत, राइट? सो वेट्यूपरेटिव, ये सारे वर्ड हैं, इसलिए मैंने इसको एक साथ ले लिया है. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन. Caustic, harsh, belittling, demeaning. We have talked about it many a times, right? Because they have been there in the competitive examination, so I have to keep this in this slide as well. The word is mendacious. झूठ मत बोलना, बाकी सब चीज है. झूठ मत बोलो, बाकी सब ठीक है. This is something which I have never heard before. Damn, you are lying. Mendacious. So you are lying is a mendacious. It's something which is false. Something which is deceitful. जो deceit करे, जो तुम्हारे को झूठ बोले, is a word mendacious. Something which is dishonest. Something which is hypocritical. ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं किसके लिए? मेंडेशियस के लिए, झूठ के लिए. पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, मेंडेशियस ही सही. पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही. That's the word mendacious is all about. Next is sardonic. Next is sardonic, right? And guess the word, guys. Guess the word. Sardonic. He is mimicking. He is sarcastic. He is making fun of someone. That's the word sarcastic or sardonic is all about. You are mocking, taunting someone, mocking someone. You are cynical about someone. You are taunting someone. ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? किसके लिए? सार्डोनिक के लिए. ये सारे वर्ड यूज होते हैं सार्डोनिक के लिए, right? Or stinging. Stinging again is the word which is used for sardonic. Let's move to the next. Ebullient, we have talked about, sir. Yes, someone who is very happy is ebullient. Someone who is singing after wine, sanguine is a ebullient. आपने बताया था, here we go, she is happy, dancing in joy, ebullient. The word is beyond. The word is beyond, right? The word is bouncy. The word is enthusiastic. ये सारे words किसके लिए यूज होते हैं? ये सारे word यूज होते हैं ebullient के लिए. You can use the word, as I said, sanguine. You can use the word for cheerful. You can use the word happy. You can use the word someone, let's say, who is on a cloud nine. ये सारे word use कर सकते हो तुम किसके लिए? Ebullient के लिए. So all these words are basically used for ebullient. Next on the list is emulate. Emulate. You must have seen some. कई बार क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आता है या फिर आरसी के अंदर क्वेश्चन आता है, which of the following option is mimicking the argument given in the passage? Which of the following option is mimicking? Mimicking का मतलब सर हमें पता है, mimicking का मतलब होता है कॉपी करना. तो अगर mimicking का मतलब पता है तो emulate का मतलब भी पता होगा. Emulate का मतलब भी क्या होता है? कॉपी करना. You are emulating the acts. Emulating का मतलब भी क्या होता है? कॉपी करना. The word is copy, right? The word is mimicking. The word is imitate करना. ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? एम्यूलेट के लिए. फॉलो करना किसी को, राइट? सो दीज आर ऑल द वर्ड्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर एम्यूलेट. द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. यस सर, हमने पढ़ा था भूखा किस्म का आदमी नहीं, वो हमने पढ़ा था ग्लटन के लिए. वो हमने पढ़ा था ग्लटन के लिए. ग्लटन इज ईटिंग पिग लाइक, भूखा आदमी, भूखड़. गवर्नमेंट, यस, he is also interested, he is also fond of eating. वो भी करेगा, but he probably won't eat pig like. But sometimes हम उसको उससे मर्ज कर देते हैं. So glutton, right? So glutton, that's what she is doing, right? So glutton का मतलब बोले greedy guts. जब भी बोलो खाना खाने के लिए, ये लोग वो होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं. इनको हम बोलते हैं gobbler,
राइट, एकदम से सटक के खा जाना. वर्ड विच वी कैन यूज इज गजलर, glutton. So glutton, as I said, glutton और गवर्नमेंट के अंदर there is a thin line of. देखो तीन अलग अलग चीजें हैं. फर्स्ट इज यू कैन यूज द वर्ड ग्लटन और अ पिग लाइक और अ गॉबलर, जो मतलब हमेशा भूखड़ किस्म का आदमी, जहां जाएगा ऐसे खाएगा जैसे कभी जिंदगी में खाना देखा ना हो. He will eat like pig. Second is a gourmet. He also like to eat food, right? He is also crazy about food, but not like glutton. And the third is connoisseur. The third is connoisseur. He is very much particular about certain things. He wants food to be presented in such a particular manner. So these are three different kind of people on the basis of the food habits they have. Cyberite. Cyberite basically is coming from the word from a country, from a Siberia, where we are talking about Cyberite. ये Cyberite personality कौन होते थे? They are pleasure seeker. They are pleasure seeker. और जब pleasure seeker की बात होती है, हम इस personality को नहीं भूल सकते. He is a Cyberite personality. He is a Cyberite personality. Hospital bed पे पड़े हुए हैं, मुंह में सिगार और बिल्कुल साथ में कुकुम्बर. What a pleasure to think, right? So he's a self-indulged in sensuous luxury, a pleasure seeker. These are the words which you can use for Chris Gale. He is a Cyberite personality. You can use this word for Vijay Mallya as well. You can use this word for any other personality you can think of. Probably for Hardik Pandya as well. They are Cyberite kind of a personality. Tranquilizer. Sir, हमें पता है tranquilizer का मतलब. Tranquilizer मतलब किसी को एकदम लटा देना, बेहोश कर देना. That's the word tranquilizers is all about. हम लोग tranquilizer देते हैं. तो आज मतलब if you see recent newspaper, उसके अंदर the tiger probably एक है जो कि city के अंदर आ गया है और उसको tranquilize करने का plan कर रहे हैं. Otherwise he will kill more villagers, right? That's what the story which is going around. So to reduce, ideally इसका मतलब क्या होता है? To reduce the tension or anxiety. ट्रैंक्विलाइजर हम लोग किस लिए देते हैं? आप शांत करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए. और एनिमल्स को भी इसीलिए दिया जाता है कि उनको शांत किया जाए, उनकी एंजाइटी को शांत किया जाए. नहीं तो they will harm the localites, which ideally they don't, right? Sedatives, these are nothing but sedatives. Calmative, as I said, narcotic, as I said. ये सारे वर्ड जो यूज होते हैं, ये सारे वर्ड यूज होते हैं ट्रैंक्विलाइज के लिए. सो इफ समवन लेट्स से सफरिंग फॉर लेट्स से इंसोम्निया, उनको दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन्स, राइट? दैट्स द वर्ड ट्रैंक्विलाइज इज ऑल अबाउट. ट्रांसग्रेस. सर कांग्रेस आपने बताया था मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स. व्हाट इज दिस ट्रांसग्रेस? ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर डिसओबेइंग. सो ट्रांसग्रेस बेसिकली मींस, अगर याद करना है इसको, फॉल फ्रॉम ग्रेस. आप ग्रेशियस हो, आप अच्छे हो, उससे जब तुम गिर जाते हो, जब तुम अपनी पर्सनैलिटी से गिर जाते हो, दैट इज ट्रांसग्रेस. यू आर डिसओबेइंग समवन, यू आर डिफाइंग समवन. दैट इज द वर्ड ट्रांसग्रेस इज ऑल अबाउट. क्विकली नोट दिस वर्ड्स डाउन. आई एम श्योर आपको वर्ड्स ये याद हो रहे होंगे, राइट? आई टॉक अबाउट दिस वर्ड्स इन शॉर्ट. ब्रीचिंग समवन ट्रस्ट इज अ transgression, right? That's the word transgression is all about. Let's quickly remember some of the words. हमने अंबानी जी के बारे में बात किया था और आप बिल्कुल सोचिए इस बारे में. अगर आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं, please do write in the comment section below. Please do give me your feedback. Your feedback will really help us a lot to improve further at Ekoching. So we talked about Prashant. Prashant के लिए हमने बात किया था पावरफुल पर्सनैलिटी मिस्टर मुकेश अंबानी की तरह. देन हमने फोटो दिखाया था KRK का. जब हमने KRK की फोटो की बात करी थी, we talked about the word opprobrium. Then we talked about maybe irresolute. Then we have talked about, let's say, Chris Gale, a Cyberite. We talked about Bhagwan Jagannath, a juggernaut. We talked about ebullient. We talked about being energetic. So ये सारे words. We talked about the word sardonic. We talked about the words mendacious. ये सारे words हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक. And let's move to the next word. The word is tyranny. The word is tyranny. What do you mean by the word tyranny? Let's say. Tyranny words is basically, see this picture again. No more killer cops. हमें और killer cops नहीं चाहिए. Stop the violence. Stop all those things against the black guys. ये मेरे ख्याल से शायद तब का पोस्टर है, when that Floyd guy who died because of this police action, right? So what exactly it is? It is despotism.
we are talking about despotism, we are talking about dictatorship, we are talking about injustice, we are talking about oppression, we are talking about repression, we are talking about cruelty. ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, अपनी मनमानी करना बंद करो. इन शॉर्ट द टायरनी बेसिकली इसका मतलब क्या है? You should stop using this to the people, you should stop using dictatorship, and that's the what tyranny is all about. आप ये बोल रहे हैं कि आप ये जो गलत चीजें कर रहे हैं इनको करना बंद कीजिए. The next is vertigo. कौन सा गो? Vertigo. Vertigo basically it's a very simple word. आपने I don't know, हमारी उम्र में शायद ये चीजें होती होंगी. आपने कभी आपके पेरेंट्स वगैरह या कोई भी रिलेटिव वगैरह, कई बार कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो नीचे झुकते हैं, चक्कर से आने लगते हैं, या फिर इफ दे डू दैट हैवी वर्क, थोड़े चक्कर से आने लग जाते हैं, उनको मेडिसिन दी जाती है उस टाइम वर्टिन करके. राइट, मैंने पहली बार पढ़ा. ये कहां से आता है? ये आता है पूरा एक्रोफोबिया से. ये पूरा क्या आता है? एक्रोफोबिया से. And that's how this is related. That's the only thing which I can say. The vertigo basically means आपको जब चक्कर आने लग जाते हैं due to heights, that's vertigo. That's vertigo. Okay, विंसिबल जिसको जीता जा सकता है, इनविंसिबल जिसको जीता नहीं जा सकता है. विंसिबल बेसिकली इज एबल टू कॉन्कर और ओवरकम. इनविंसिबल जिसको जीता नहीं जा सकता है, विंसिबल जिसको जीता जा सकता है, दैट इज विंसिबल. दैट्स व्हाट द वर्ड इज ऑल अबाउट. Impoverish, yes sir, हमने पढ़ा था, आपने हमें याद कराया था कि जिसके अंदर पोवर की बात हो रही है, मतलब पोवर्टी की बात हो रही है, गरीब आदमी, पेन्यूरिश आदमी, उसके लिए आपने वर्ड किया था impoverish. Coming to we are coming to poor this thing is a poverish. See this girl, see this baby, opening the wallet and finding nothing. Impoverish, जब making poor, reduce to penury, ruin करना, cripple करना, ये सारे beggar जिसको बोलते हैं हम लोग, that is the word impoverish is all about. Nothing for this baby, a very negative word for baby, but just to make you guys understand, जब आप कई बार रोते हो जब कुछ नहीं मिलता है, when you are expecting something, that is impoverish. और वही अगर तुम्हें गलती से अपनी बुक के अंदर बहुत ज्यादा कुछ पैसे मिल जाए या कुछ 100 रुपए का नोट भी मिल जाए, what a feeling at that point of time you get. That's the word impoverish is all about. Zenith सर हमें पता है, Zenith के कंप्यूटर आते थे. Zenith का मतलब होता है हाईएस्ट. Zenith का मतलब होता है हाईएस्ट, the highest peak. The highest peak, I don't want to comment anything. The highest peak, someone who is very high. Right? अब ये क्या करके हाई हुए हैं मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं मारूंगा. Someone who is very high is Zenith. Right? High point is Zenith. Top of the world, Zenith. Cloud 9, Zenith. Apex, Zenith. Crown, Zenith. Crest, Zenith. Summit, Zenith. Highest peak is Zenith. ये सारे वर्ड क्या हैं? Zenith से आए हैं. क्रेस्ट अगर तुम्हें पता हो, हम लोग कई बार बोलते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ. राइट, समुद्र में जो लहरें आती हैं, दे हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ. इसको बोला जाता है क्रेस्ट और इसको बोला जाता है ट्रफ्स. राइट, सो दीज आर क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. सो ऑल दोस हाईएस्ट पॉइंट्स आर क्रेस्ट और समवन गोइंग टू पीक. लैक्रिमोस, व्हाट इज लैक्रिमोस? सर, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू सैड, something which is related to doleful, something which is related to very sad kind of a thing. Yes, you guys are right. Lacrimos is doleful. हमने doleful word पढ़ लिया था. हमने lacrimos अब पहली बार पढ़ रहे हैं सर. हमने dolorous word पढ़ लिया था. हम पढ़ रहे हैं word lugubrious. Lugubrious is a word. याद करो again. So, dolorous, doleful, lacrimos, lugubrious. ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? सैड के लिए. मेलनकॉलिक, यस, वी हैव वर्ड द वर्ड मेलनकॉलिक एज वेल. आपको लेट्स से ऑड वर्ड आउट के अंदर आएगा कि मेरा आपको बस लैक्रिमोस, अगर लेट्स से आपको वर्ड किस तरीके से आएगा, लैक्रिमोस इज अ वर्ड. लैक्रिमोस का मीनिंग क्या है? क्या इसका मीनिंग डोलफुल है? आपको वर्ड कुछ इस तरीके से आएगा. लैक्रिमोस का मतलब क्या है? इज इट सैंग्वाइन? इज इट सर्पेंटाइन? Is it reclusive or is it lugubrious? अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे को इसमें से मतलब ज्यादा का पता नहीं होगा. राइट,
हालांकि बाकी तीन का कोई लेना देना नहीं है, बट द पॉइंट इज हमें पता नहीं होगा, एंड दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग, राइट? सो प्लीज डू एंश्योर वोकैबुलरी इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ग्रैंडिलोक्वेंट, गेस द वर्ड. लेट्स गेस द वर्ड टुगेदर. हमने वर्ड पढ़ा था loquacious. हमने वर्ड पढ़ा था loquacious, something related to talkative, something related to talkative. ग्रैंड का मतलब सर पता है, something which is big, बड़ी बात करने वाला. क्या बड़ी बात करने वाला locutive है? Let's see this image. I'm sure you will enjoy this GIFs, right? So grandiloquent का मतलब है something which is, yes you guys are right, extravagant. In terms of talking, something which is a extravagant talker, something which is a pompous talker, a bombastic kind of a personality. ये सब word use होते हैं किसके लिए? Grandiloquent के लिए. Someone who is very big, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता हो. Extravagant personality is a grandiloquent. The next is soporific. मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. Tranquilizer is nothing but sporific. Tranquilizer is nothing but sporific, जहां मैंने बात की है sleeping pill के लिए, right? The next word is parochial. Now, what do you mean by the word parochial? Let's talk about this. Don't be narrow-minded. हम लोग हमेशा बोलते हैं, right? हम लोग घर पे बोलते हैं, you guys are such orthodox kind of a personality. Don't get into orthodox thing. And parochial का मतलब ही क्या होता है? Parochial का मतलब होता है, so ये word कहाँ से आया है? Something related to church. और उसको हम लोगों ने orthodox sense के अंदर यूज देना इसलिए शुरू किया है because चर्च के अंदर कई बार हम लोग बात करते थे यूजिंग, बिकॉज देयर इज स्टिल देयर डिस्कशन कई बार होता है यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ऑल दोस थिंग्स. सो सम ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग रिलेटेड टू द चर्च इज basically parochial, something which is restricted, something which is small minded, something which is prescribed, something which is banned, something which is narrow minded. ये सारे वर्ड जो यूज होते हैं, ये सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं विद द वर्ड parochial. The word is parochial. Next, let's move to the next word. The word is abater, right? If you read something related to legal terminologies, we talk about the section there, abatement, the law of abatement, which means तुमने भी साथ दिया चोरी करने के लिए तो आप भी क्या हैं? एबेटर हैं, राइट? वहां पर सेक्शन अबेटमेंट का लगता है आईपीसी लॉ क्राइम्स के अंदर. सो यहां पर अगर आप देखोगे, दैट्स द अबेटमेंट व्हिच इज डूइंग, ही विल एग्जीक्यूट एंड ही इज हेल्पिंग दिस गाय टू एग्जीक्यूट, राइट? हालांकि ये नेगेटिव टर्म्स के अंदर यूज होता है जनरली. सो एबेटर का बेसिकली मतलब होता है सपोर्टर, असिस्टेंस, इंस्टिगेटर, समवन जो इंस्टिगेट करे, समवन जो इंस्टिगेट करे. दैट्स द वर्ड एबेटर इज ऑल अबाउट, राइट? नेक्स्ट इज egregious. यस सर, आपने मेरे ख्याल से हमारे को बताया था, आपने जो पहला वीडियो बात किया था, egregious का मतलब होता है something which is very bad, right? Let's see the image. Here we go. What a kind of expression these guys are giving and the kind of personality which they are showing. Outstandingly bad, horrific, terrible, awful, dire, right? ये सारे वर्ड यूज होते हैं किसके लिए? ये सारे वर्ड यूज होते हैं egregious. It's not egregious, it is egregious, something which is outstandingly bad. I hope you can remember the words, guys. अगली बार कोई ऐसा पर्सनैलिटी तुम्हारे सामने आ जाए, बोलना don't show your egregious face. भाई अब सामने वाला भी डरेगा, भाई क्या बोल के गया, हाँ? So that's the word egregious is all about. Glaring, which we shall talk about, right? Okay, cantankerous again. Cantankerous, right? Someone who is bad tempered. कई लोग ऐसे होते हैं ना, रूस के एकदम बैठ जाएंगे, नहीं मैं बात नहीं करने वाला, उनसे मजाक करने लग जाओ. कई बार हमारे रिलेटिव्स के अंदर भी होते हैं, कई बार हमारे घरों में भी होते हैं, मैं बात नहीं करने वाला, मैं नाराज हूं, राइट? Cantankerous, the word of someone who is bad tempered, someone who is grumpy, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, someone who is grouchy, hot tempered, awkward, right? क्लास के अंदर एक वो बंदा जरूर होता है जिसके तुम बिल्कुल मजे लेना नहीं छोड़ते हो, हाँ? बिकॉज तुम्हें पता है ही इज अ बैड टेम्पर्ड गाय. अपने ग्रुप के अंदर हमेशा एक फ्रेंड ऐसा होता है which you know कि जल्दी इंस्टिगेट हो जाएगा. So that's the word which you can use for bad tempered guy. Cantankerous personality, right? You can use the word cheapy, eagy, right? ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. Zest, नेस्ट नहीं है, जेस्ट है. वाव
what kind of expression this guy is showing. Right? पता नहीं क्या करना चाह रहा है और मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिया है. Zest is something which is showing a great enthusiasm and energy. Right? Zest, the way that faculty is teaching with zest. Zest is a great enthusiasm and energy. You can use the word keenness. You can use the word avidity, excitement, vigor. ये सारे वर्ड हमने vigor ये वर्ड puissant के लिए भी यूज किया था. हमने energetic वर्ड वहां पर भी यूज किया था. Can I use that zest word there? Yes, zest can be a synonym for puissant as well. Right? So these are the words which basically have already there in the old management exam. I mean, in the previous year management exams. Do take a note of these words, guys. I'm telling you, it will be definitely be helpful when you are preparing for your other exams as well. Next is metal. Show me your metal that you can do this. Show me your metal. Those who are listening, watching this video, show me your metal and go and crack your CAT examination. Show me what you are made of. Show me your power. Show me your strength. That's the word metal is all about. Boldness, audacity, guts, stamp, backbone. Right? ये सारे words basically use होते हैं metal के लिए. I mean boldness के लिए, आपकी personality के लिए. Bucolic kind of a nature, rustic. Bucolic, guys, याद करने का तरीका. Bull, cow like characteristics of rural areas and their inhabitants. Bucolic is bull, cow like characteristics और जो लोग वहां रहते हैं is bucolic, which means rustic. देसी ना बोला कर छोरी रे. गाना सुना है तो तुम्हारे को वो गाना इस तरीके से बोलना है, bucolic ना बोला कर छोरी रे. हाँ, that's the word. Bucolic is all about rural, something which is rural, something which is countryside, something which is related to agriculture. The word is bucolic. अगली बार वो गाना इसी तरीके से याद करोगे, bucolic मत बोला कर. Right? That's the word bucolic is all about. Here we go. Next is Zingoism. Right? Zingoism, sir. Yes, हमने word सुना हुआ है. So we are talking about three things here. First is patriotism. Yes, sir. ये आपने पढ़ाया था when you were talking about RSS chief Mohan Bhagwat. Right? So patriotism is love and devotion to one country is a patriotism. Nationalism is devotion to one culture. Patriotism country के लिए. Patriotism country के लिए. Nationalism culture के लिए. इंडिया के लिए पैट्रियटिज्म, हिंदू तत्व के लिए नेशनलिज्म. एंड देन जिंगोइज्म क्या है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म characterized especially by belligerent foreign policy. Basically what I don't have to comment, that's my opinion. What RSS think we are talking about is a zingoism, right? So it's an extreme nationalism, a militarism, a chauvinism is a zingoism, right? Not really, but eventually may get into this. Camaraderie. When you and your friends share a common camaraderie, you have a good camaraderie. Sir, क्या बातें कर रहे हो? Yes, when you and your friend share a common camaraderie, you have a good camaraderie. याद रहेगा यार, याद रहेगा. Friend serial, camaraderie, they share common things. Camaraderie मतलब a sense of brotherhood, a sense of solidarity, a sense of sisterhood, fellowship, companionship, friendship. ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? ये सारे वर्ड यूज होते हैं किसके लिए? Camaraderie के लिए. With this, I am coming to the end of this session. Thanks a lot for listening to this session, and I hope I have covered more than 120 words in this session. Please, and you must have written the notes, and when we are coming to the end of vocabulary building session today, please do comment in the section, in the comment section below how many words we have covered here, and I'm sure the things, and when I'm talking about how to remember these words, I hope you have enjoyed this as well. With this, I'm coming to the end of vocabulary building module. Thank you, and keep watching Ekoching and stay tuned for module 2, which is reading comprehension.